Public TV. You're watching the biggest story tonight, and we're getting more as far as another center-state battle between West Bengal, Mamata Banerjee, and the central government is concerned. That too, even when the fight against COVID-19 should be the primary concern all across the country. First up, let's get you more of the face-off between West Bengal government and the MHA. This has been almost a pattern where West Bengal has been seen to resist certain measures or guidelines set by the central government. Now, the latest face-off comes on the IMCT teams that have been deputed by the central government in hotspot cities that are reporting large number of cases. Kolkata and some other places in West Bengal are part of this. Mamata Banerjee has written a 3-page letter to the central government raising several issues. One, that the April 19 decision came to them only by April 20, and the team had already reached the ground even before they could get to know what was happening. Let's go across to our correspondents tracking more. Aishwarya Kapoor, our political editor, is joining us. Also from Kolkata, Suryagini is joining us for the latest. First up, let's go across to Suryagini on this 3-page letter that Mamata Banerjee has written. Suryagini, she's raising a lot of objections. She has already objected to the fact that as far as spirit of federalism is concerned, they want to know the criteria under which certain hotspots in the state have been selected. But in this 3-page letter, she's going even beyond that. Well, absolutely. And, you know, the letter that we have accessed over here at Republic TV, what we need to understand is the content of the letter. Now, you know, if we just read the second particular paragraph of this 3-page letter, we will understand what exactly the issue is and why the Chief Minister is writing to the Prime Minister. I would just read out an expert over here. It states that the state government was supposed to provide logistic arrangements. The central team kept the state government in complete dark and had approached central forces like BSF, SSB for logistical support and had already moved in the field without any consultation with the state government. This is the major issue over here. That is what the letter states. And the last part of the letter, it's something that, you know, that we need to focus on again. It also states that I am sure this is the Chief Minister, right? So, Yagini, I just have to interrupt you for a brief moment. Dilip Ghosh of the BJP is actually joining us over the phone line. Let's go across to him for the first reaction. You know, this is reminding me a lot of the face-off that has been ongoing in the state, Dilip Ghosh. You know, if you remember what happened as far as Kolkata Top-Cop was also concerned. Here, Mamata Banerjee is saying that the state government and its forces were not used or informed properly, even as the central teams arrived on ground to take stock of the situation. What do you have to say? ट्रेडिशन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई हिसाब मांगा जाए, कोई चिट्ठी पत्र या उत्तर मांगा जाए, तुरंत उसके अगेंस्ट में यहाँ आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है। गो बैक से लेकर हर प्रकार की, और इसको राजनीति माना जाता है। तुरंत यहाँ की जो युक्तराष्ट्रीय काठामो उसका खिलाफ आक्रमण इस प्रकार प्रचार किया जाता है। अभी भी वही प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो चिट्ठी जो सरकार ने भेजी है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के किन किन धारा के अनुसार सरकार ये कार्रवाई कर रही है, पूरा लिख के भेजा है। और इसके पहले भी कई एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ आई है, लॉकडाउन को लेकर के बाकी व्यवस्था की तरफ से कई कंप्लेन है। हम भी स्टेट प्रेसिडेंट के नाते, एमपी के नाते माननीय हेल्थ मिनिस्टर को, फूड मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखा है और होम मिनिस्टर को भी कॉपी दिया है कि क्या क्या चल रहा है। माननीय गवर्नर यहाँ के उन्होंने भी बार बार विषय उठाया कि ये ठीक नहीं हो रहा है और उसका क्रिटिसाइज करते हैं कि बोले ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर चीज छुपाया जा रहा है। डेट कितनी हुई है, कितने टेस्ट हुए, क्यों नहीं टेस्ट हो रहा है। नेशनल एवरेज 150 होता है पर मिलियन, यहाँ होता है 39 और राजस्थान में होता है 550। क्यों ऐसा डिफरेंस होता है? ये सारी बातों को जानने के लिए वहाँ भेजा गया है और इनको लग रहा है कि सारा पोल खुल जाएगा, इसीलिए इन्होंने रास्ते में उतर कर आ जाए। अब रास्ते नहीं होंगे, कल अगर नारा लग जाएगा गो बैक और हमारी केंद्रीय ये जो राज्य सरकार के ऊपर हस्तक्षेप है, मोदी सरकार राजनीति कर रही है, ये सारी बातें आएगी कि हर चीज में इनका यही है। केंद्र सरकार फंड भेजती है, जैसा कि हिसाब मांगा जाएगा तुरंत आंदोलन शुरू हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर रास्ते में उतर आती है, ना कोई हिसाब पत्री, पीएचडी रिपोर्ट से आता है, हमेशा आता है, कोई रिपोर्ट नहीं आता है, कोई हिसाब नहीं आता है। इसलिए केवल पॉलिटिक्स और छुपाने की जो चल रही थी यहाँ, ये महामारी की इसको बचाने के लिए, छुपाने के लिए
ये आंदोलन शुरू हो गया है। दिलीप घोष, आप ये मानते हैं, आप कह रहे हैं और आप ये मानते हैं कि वेस्ट बंगाल में छुपाए जा रहे हैं नंबर जो डेथ हुई है या जो केसेस हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है वेस्ट बंगाल में? देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर की आदत थी पुरानी कि वो हर चीज को छिपाते हैं और झूठ बोलते हैं। सारे हम विधानसभा में खड़ा होकर बोलते हैं। अब देखिए, देश भर में पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सप्लायर, सबको हम सम्मानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग उनके बारे में सम्मान। और यहाँ पुलिस को भगा भगा के मारा जा रहा है कई जगह, हाथ पांव तोड़ दिया, या कल भी हुआ है, परसों में। क्यों हो रहा है? ये राज्य सरकार ने जो छिपा रही है, यहाँ की डेड बॉडी दूसरी जगह लेकर दफना रही है और जला रही है। लोग मना कर रहे हैं, वहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, और मौत के बाद उसको बोला जा रहा है कि ये एकदम सीधा इनका ऑर्डर है कि कोई लिखेगा नहीं कि यहाँ कोविड-19। एक टीम बनाया गया है, वो लोग तय करेंगे कि कौन किस बीमारी से मरा है, और उसका जो हेड कर रहे हैं वो गैस्ट्रोसाइटिस, मतलब पेट की बीमारी को देखने वाला पेट का डॉक्टर है, वो उसका हेड है। तो सब चीज छुपाने की जो प्रयास है, लोगों में बहुत गुस्सा है। और कम से कम 10 डॉक्टर ऐसे हैं उसमें, हॉस्पिटल का सुपर, डेप्यूटी सुपर, ये लोग हॉस्पिटल में हैं, और ये लोग वेंटिलेटर में हैं। तो डॉक्टर्स, नर्स और कर्मचारी का बीमार हो जाए, लगभग 10 हॉस्पिटल बंद करना पड़ा है। इतना इन्फेक्शन हो गया है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, और प्राइवेट जो अच्छा हॉस्पिटल वही चल। Dilip Ghosh, you're raising a lot of very severe allegations, and of course there needs to be more proof for all of this as well. What is clear is though that the fight against COVID-19 has become highly political. Now we can continue to try and assert and blame. Of course, the BJP is blaming the TMC is saying exact opposite. I do thank you for joining us. Let's also go across to Aishwarya now for more on this. So Aishwarya, you must have heard what Dilip Ghosh is saying. BJP is alleging, statewide cover-up as far as the numbers are concerned. And one can only scratch their heads and wonder why something like this will happen, because just reducing the numbers on paper will not help. The situation will be what it is on ground, and people's lives are at stake. But let's focus a little bit more on the MHA deputing ICMT teams. And West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, again true to form, opposing even that. Not what one political party says against the other. What BJP says against the TMC says against the BJP, that can still be understood. But if the Doctors Association of West Bengal comes out and why is the state government not issuing the real figures of COVID-19 patients in the state, that's when the point of concern raises. So my issue is that when the doctors, the corona warriors, they are raising an issue with Mamata Banerjee, that's when the issue becomes serious. It's not what Dilip Ghosh says. You can still see it with the whole political color. But when the corona warriors, when those doctors and nurses who are at the forefront, who say that, tell the real numbers, so that the people of the state will be able to understand that how sensitive the situation is, even for the state of West Bengal. West Bengal does not have a special cover that it will protect its constituents from this COVID-19. It's a national, international calamity. It's a pandemic. And that's why Mamata Banerjee, just by trying to show that she's governing those, just trying to show that the numbers under her rule are really less. If she will do this, then if the doctors are coming out with the complaints, and there is not one, but several complaints being done by several different associations of medical practitioners in her own state. And that is something which she as a chief minister should see, that if someone is doing it under her nose, she should not allow it. This is above BJP, TMC. This is a fight for humanity, and it's still not over. This is not over. The lockdown still continues till the 3rd, and even post that, once the lockdown gets over, we have to gradually and only gradually sort it out, because the only known solution for corona still remains social distancing, and you cannot deny that. So irrespective whether it is, Shivan. Absolutely. So the big question continues to be that why not cooperate at this time? You cannot just ask for funds from the central government when you deem it fit, but actually have no accountability for what is really happening, for what is not your state subject alone. It's a national disaster and has been invoked as such. And the central government is also responsible. And other people, apart from those from West Bengal, will also be affected by what the situation is in one particular state. So this is really not the time to invoke federalism per se.
Cooperation is required, but as is often the case when it comes to Mamata Banerjee, remember I mentioned what happened as far as the Kolkata top cop is concerned. Central forces, agencies were barred by state forces, and here Mamata Banerjee is raising an objection that the central teams actually use central forces. But she must look at the history of her own state and the behavior of her state under her. Let's also all right, I believe Aishwarya wants to come in. Aishwarya, we have another reaction lined up, but before that, quickly. No, my only point is that in our one-on-one conversation, she's had 3 to 4 separate one-on-one conversations with the Prime Minister. Not once has she mentioned that the centre is over-crossing that line. That's the point. That when she talks to the Prime Minister, she doesn't mention. It is only when the communication happens right from the Chief Secretary, DGP levels. So she's playing behind that card, and that is something which needs to end, because this is for the betterment of our own people. She needs to rise above. She needs to raise above. She needs to raise the bar, because it's for saving the lives of our own jobs. Absolutely. All right, let's also listen in though to what Kolkata Chief Secretary has had to say on this. কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের কিভাবে কাজ হবে ইন ফেডারেল সেটআপ সেটা দেওয়া আছে। এরা নেমে কোথাও এসএসবি কে নিয়ে, কোথাও বিএসএফ কে নিয়ে এরা মাঠে চলে গেছে। এবার এটা নিজেদের ইন্টারনাল যে ওদের সার্কুলার রয়েছে তার উল্লঙ্ঘন হয়েছে, প্লাস আমরা মনে করি যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের কাছে এসে কথা বলে আমাদের কাছ থেকে ব্রিফিং নিয়ে তারপরে যদি প্রয়োজন হতো ওরা ফিল্ডে যেতেন। কিন্তু এমনভাবে মনে হচ্ছে যে আমরা কিছু লুকোচ্ছি, নেমেছেন এয়ারপোর্ট থেকেই সরাসরি ফিল্ডে চলে যাচ্ছেন, এটা কিন্তু আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমরা বলেছি আসুন আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলুন, রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন চিফ সেক্রেটারি, আমার ঘরে আসুন, আমার সঙ্গে কথা বলুন, ব্রিফিং করব, তারপরে যদি মনে হবে প্রয়োজন হবে ফিল্ডে যাবে, প্রয়োজন না হবে ফিল্ডে যাবেন না।